Ayes have it. Consequently, clause 3 stands part of the bill. The question is that clause 4 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 4 stands part of the bill. The question is that clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 1 preamble and short title stand part of the bill. Khwaja Mohammad Asif, Defence Minister, to move item number 4R. Further to amend the Pakistan Air Force Act 1953, the Pakistan Air Force Amendment Bill 2024 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend Pakistan Air Force Act 1953, the Pakistan Air Force Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. Item number 4S, Defence Minister, to move item number 4S. I move that the bill further to amend the Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Amendment Bill 2024, as introduced in the National Assembly, be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Amendment Bill 2024, as introduced in the National Assembly, be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. The bill is now taken up clause by clause. The question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 stands part of the bill. The question is that clause 3 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 3 stands part of the bill. The question is that clause 4 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 4 stands part of the bill. Clause 1, preamble and short title. The question is clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Clause 1, preamble and short title stand part of the bill. Khwaja Mohammad Asif, Defence Minister, to move item number 4T. Sir, I move that the bill further to amend the Pakistan Navy Ordinance, the Pakistan Navy Amendment Bill 2024 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Ordinance Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, bill is passed. Denji. The House is adjourned to meet again on Tuesday, 5th November at 11 a.m. स्पीकर अय्याज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त भी जारी है। 3 बिल्स आज मंजूर किए गए हैं जो कि पेश किए गए से पहले वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से 2 बिल पेश किए गए हैं। जो उन्होंने पेश किए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 करने का बिल था। कौमी असम्बली से कसरत राय से ये बिल मंजूर किया जा चुका है। आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल भी कौमी असम्बली में पेश किया गया और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ये बिल पेश किया और ये बिल भी कसरत राय से मंजूर किया गया है। इस दौरान हमने देखा कि मुसलसल अपोजिशन अरकान और हुकूमती अरकान की जानिब से नारेबाजी की जा रही थी। मुसलसल शोर शराबा हमें सुनने में आ रहा था। अभी कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी किया गया है, लेकिन इस दौरान 3 बिल्स पेश किए गए थे और तीनों बिल्स कसरत राय से मंजूर किए गए हैं। ईवान में इस दौरान खूब गर्मा गर्मी भी हुई। शेख वकास अकरम और अता तारड़ में हाथापाई भी देखने में आई। मुसलसल नारेबाजी की जा रही थी हुकूमती अरकान और अपोजिशन अरकान की जानिब से और अपोजिशन अरकान ने बिल्स की कॉपीज़ भी फाड़ी। नो नो के नारे भी लगाते रहे। इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की कॉपियाँ भी फाड़ी गई और ये बिल कसरत राय से मंजूर किया गया है। आज पेश किया गया था यह बिल वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से और बिल मंजूर होने के दौरान मुसलसल अपोजिशन अरकान की जानिब से शोर शराबा दिखाई दिया।
آوازیں آتی رہیں، نعرے بازی کی جاتی رہی، نو نو کے نعرے اور شدید اختلاف سامنے آیا۔ حکومتی ارکان اور اپوزیشن ارکان میں شدید نعرے بازی کا مقابلہ بھی دیکھنے میں آیا۔ حکومتی اور اپوزیشن ارکان گتھم گتھا بھی ہوئے۔ اس سارے سینیریو میں ہم نے دیکھا کہ شیخ وقاص اکرم اور عطا تارڑ میں ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے۔ 3 بلز آج پیش کیے گئے ہیں۔ بل جو کہ پیش کیے جانے تھے، وزیر قانون اعظم رضی تارڑ کی جانب سے 2 بلز پیش کیے گئے ہیں، جبکہ وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے آرمی ایکٹ ترمیمی بل پیش کیا گیا، وہ بھی کثرت رائے سے منظور کیا جا چکا ہے۔